कराची के एक मकामी होटल में कोरिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम 2023 का इनेकाद किया गया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद तारिक यूसुफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने आज़ाद तिजारती माहदे FTA में पेशरफ्त की अशद ज़रूरत पर जोर दिया ताकि मैन्युफैक्चरिंग, हाइड्रोपावर सेक्टर, SME, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबों में दस्तियाब मौके से फ़ायदा उठाया जा सके और दो तरफा तिजारती और इक़्तिसादी इंज़माम को बढ़ाया जाए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान कोरिया FTA अच्छे तिजारती ताल्लुकात की राह हमवार करेगा और सरमायाकारी के नए रास्ते खोलेगा। Since then, Korea-Pakistan diplomatic relationship and economic integration deepened further, mainly in the areas of trade, investments, human exchange, and development cooperation. Korea-Pakistan diplomatic relationship and economic integration deepened further, mainly in the areas of trade, investment. South Korea's developed a new village movement, has become a global model for poverty education by UNESCO, working with 92 villages in developing countries in the name of Global New Village Movement projects. Pakistan agriculture has a share of 20% of GDP and over 50% population live in the rural areas. Korean companies could help Pakistan in capacity building of our farmers in poverty eradication and may uplift rural development programs in Pakistan. Your Excellency, I will add on my feeling also during my speech. Agriculture is an area where our yield is very poor, and also in the fisheries industries our yield or our working is very poor. We need to have the know-how, in particular not in the industrial section but also in the agricultural area, where we can improve upon the quality of land also, we can meet the scarcity of water also, and we can have a better yield per square meter or per 1,000 meter, whatever the case may be calculation. But we must look at that hybrid system of agriculture in Pakistan. कोरिया पाकिस्तान बिजनेस फोरम 2023 में कोरिया के सफीर Sangpyo, डायरेक्टर जनरल KOTRA केम सिंह जे, कोरिया के कौंसल जनरल यी सिंहू, KCCI के सीनियर नायब सदर तौसीफ अहमद, नायब सदर हारिस अगर, की ऑटोमोटिव पाकिस्तान के सदर मोहम्मद फैसल, KCCI की मैनेजिंग कमेटी के अरकान और पाकिस्तान में कोरिया के मुमताज ताजिर भी मौजूद थे।